एबे वॉइस आसला एबे वॉइस आसला म आउथर एक्सप्लेन कर दोची जेतेबेले अनपेड वर्क सपोज करूछंती सपोज आपनकर मदर अछंती अनपेड वाला जति वर्क अछि कि मम्मी मते पानी ग्लास आनी दियो मम्मी काली मते ड्रेस टा पिंदी के जिबार अछि मते टा सफा कर दियो कि भौणी तुमको खाया दे देला so you are not they are not getting paid because of their household work whatever the work they are doing so that means what that money that work is coming under care economy not monetized economy बुझि पाइलो जेतेबेले monetize वाला economy रे आसुनी जेतेबेले हम total goods and services हमें calculate करबा ताले से प्रोडक्ट्स हमें ताको नबा ही नहीं तो फास्ट वाला तो आपण मानकर भूल हे गला the depletion of natural forest for timber production no this is also not coming under the gdp this is the problem gdp रे आपण क्वालिटी देखु ही नांती only we are looking into the quantity perspective कि केते प्रोडक्शन हेची केमती हेची degradation of the environment degradation of the forest deforestation is happening urbanization happening we're not looking into that whatever the repercussion that means externalities that we're not coming considering while we are calculating gdps बुझि पाइलो एक्सटर्नलिटीज माने कोन ना जते बेले हमें गोटे जिंस काउरुचंती तार बाय प्रोडक्ट कोन होची सपोज you love gardening that is why you are planting lots and lot of trees but at the externalities what will the externalities and these trees will grow and when it will grow it will also regulate the microclimatic condition in that particular area that is externality positive एबे आपण माने बहुत ज्यादा खाउचंती चिप्स खाउचंती बाकी कोन प्लास्टिक रैप अछि आपण याडे सेटा फोपाड़ दोछ तो एक्सटर्नलिटीज कोन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हला यारो कि से जिंस पोल्यूशन क्रिएट करबो जोटे कि हार्मफुल हो फॉर द एनवायरनमेंट ओके तो ए जिंस को हमें कैलकुलेट करनांती profit earned by a subsidiary of a foreign company in India that are not repatriated बुझि पाइलो जदी म आपण कहली जदी कोनोसी भी कंपनी अच्छी इंडिया रे कहीं डोमेस्टिक अच्छी मीन्स डिफाइंड टेरिटोरी विद इन द टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री within the territory of a country where whoever is producing doesn't matter where the production and service is happening that is matter is it happening inside the India yes then this is coming under GDP जदि आमी कहबा कोठी प्रोडक्शन होची सब जिंस जीडीपी रे आसीबा when we will talk about who is producing that is coming under national income बुझिला national product कि आपण कहबे gross national product कि who is producing where this production is happening that is coming under GDP domestic product तो से भाई ए जिंसटा आपण राइट हला the value generated by a free to use public digital platform like UPI not possible because the value accurately we cannot get the accurate data so this so fourth वाला जो option अछि that is also incorrect okay what is the answer na option number 1 only 1 any doubt तापरे second question doubt किछि अछि ना आगु जिबा second question second अछि कि consider the following activities a factory producing cars for domestic consumption a family providing unpaid household services a company exporting software services abroad sorry D is missing abroad okay the resale of second hand goods in the domestic market how many of the above activities is or are included in the calculation of the country's GDP ओनरशिप गोटे अलग जिनस बुझि पाइलो ये ओनर अछि सेटा होछि अलग जिनस कोठी प्रोडक्शन होछि वेयर द प्रोडक्शन इज हैपनिंग बी दउछ आंसर ओनली 2 सेकंड नंबर अछि बी ओनली 2 नो नो जोठी प्रोडक्शन होछि सेटा आपण मानकर जीडीपी रे आसीबो जदी आपनकर इंडिया भीतर प्रोडक्शन होछि एटा आपनकर जीडीपी रे आसीबो जीएनपी रे आसीबोनी
किए प्रोडक्शन करूची सेतेबेले आपण मानकर आसीबो जीएनपी किए प्रोडक्शन करूची सेतेबेले आपण मानकर आसीबो जीएनपी बुझी पाइले कि नहीं देख जेतेबेले आपण मानकर सपोज कि आपनकर गोटे कंपनी अछि आपनकर हमर जीएनपी केमती कैलकुलेशन करबा तो जेतेबेले तांको स्टेट तांकर जदी कंट्री अछि तांको कंट्री भी इंडिया रे किछि कंपनी थिबो कि इंडिया रे किछि इंडिविजुअल थिबे जो माने पैसा इनकम करथिबे तो सेमानकर हमर जो इंडिविजुअल अछंती सेमान जडे कि बाहर कंट्री रे इनकम करछन सेटा तांको जीडीपी रे कैलकुलेट हबो सेमान जदी हम कंट्री से हम जीडीपी रे कैलकुलेट जीएनपी केते हबो ना नेट नेट जब हम इनकम बाहर करबा फ्रॉम द एब्रॉड माने केते टंका हम दो बाहर को पळोची हम कंट्री रो जीडीपी परे आ केते टंका हमर आसुची तापरे हम बाहर करबा जीएनपी नेशनल बुझिलो नेशनल माने किए प्रोड्यूस करछि किए हु इज अर्निंग किए करछि को को कंपनी करछि इंडियन कंपनी फॉरेन ले करछि अमेरिकन कंपनी इंडिया रे करछि तो जीएनपी रे आसीबो न कि जीडीपी रे आसीबो केवल डोमेस्टिक टेरिटोरी भीतर ओके जीएनपी रे आसीबो बुझिला इवन कि जो भी हमर एम्बासी अछि एम्बासी जो जिंस हमर इंडियन एम्बासी सपोज अछि अमेरिका रे अछि बाकी सब कंट्री रे अछि तो एम्बासी भीतर जहां भी प्रोडक्शन होछि ना से सब हमर इंडियन जीडीपी रे ही आसीबो केना एम्बासी ऑल्दो इट इज सिचुएटेड इन द डिफरेंट कंट्री कमिंग अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द इंडिया तो ता भीतर जहां भी प्रोडक्शन के गुड्स होतबो से सब जिंस गुड्स प्रोडक्शन हैला कि सर्विस प्रोवाइड करला सब जिंस जीडीपी ऑफ द इंडिया रे ही कैलकुलेट हबो आ लाइक वाइज भी अदर स्टेट मानकर भी सेम okay so first kon achi ki how many of above activities is included in the calculation of the country's gdp factory producing car for domestic consumption agent sabaki हमनी yes family providing unpaid household services no unpaid हेगला माने care economy आसी गला third is the company exporting software service abroad जदि गोटे कंपनी कोन करछि एक्सपोर्ट करछि सॉफ्टवेयर सर्विस कोन हबो विवेक आंसर एक्सपोर्ट जदि हमें जिंस करूछन यस विवेक वेरी गुड जदि हमें एक्सपोर्ट भी जदि हमें करूछन फिर भी एटा सर्विस सेक्टर आसुची बट प्रोडक्शन और सर्विसेज कोड होची हम कंट्री रे होची ना तो एटा भी अपन मानकर करेक्ट हबो तो रीसेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट नो रीसेल जो जिंस हुए सेटा हमर जीडीपी रे हुए नहीं काना ऑलरेडी सेटा जीडीपी रे कैलकुलेट हे जाई थाए तो डेप्रिसिएशन पर जो वैल्यू आसे सेटा हमर जीडीपी रे कैलकुलेट हुए नाही ओके तो कोन आंसर हबो ओनली टू वेरी गुड विवेक तो बी विल बी द करेक्ट आंसर आगो जिबा in the context of GDP calculation, in the context of GDP, good evening, Kesav. So in the context of GDP calculation, which of the following are considered part of the domestic territory of a country? तो कहा को हमें कहबे कि domestic territory of our country, a factory located within the country but owned by a foreign corporation. Indians embassies in foreign countries, Indian companies operating in foreign social economic zones, a SEEB registered in India but operating between foreign countries. ओहो एटा एठी आसबो पिला माने ओके तबे को कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो तो कोड आपनकर इंक्लूडेड हबो विवेक कोन छ 3b 1 2 and 4 3 कोन में हबनी जीडीपी अछि बुझी पाछ त नै 1 2 and 4 होची राइट आंसर हबो कोन पे ना तुमको एठी जीडीपी कहिची तो जीडीपी बेसिकली कहा पर वेयर भाई कोठी होची कोठी त मानकर गुड्स आउ सर्विसेज होची गुड्स एंड सर्विसेज वेयर प्रोडक्शन होची बुझी पाइलो तो ए फैक्ट्री लोकेटेड विद इन द कंट्री यस एम्बासीज एबे कहिली तो एटा ही हबनी काहे कि ना एटा होची आउ गुटे कंट्री रो फॉरेन फॉरेन कंट्री रो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होची तो एटा हबनी यस एटा भी हबो रजिस्टर जदी हम कंट्री रे हेची ताले सेटा भी हमर ही एसेट करा जिवो ताले बी विल बी द राइट आंसर 1 2 and 4 what is the defining characteristics of a final good in national income accounting जदी हमें कहबो फाइनल गुड कोन वर्षा होची पिला माने समटे टिके टिके बुली आसो बाहर हैला मजा नियो
So what is the defining characteristics of a final good in refers to the product that is used as a raw material ना देखो raw material हे गला माने final goods से जीवनी सेटा intermediate goods सब एई वर्षा पागरे इकोनॉमिक्स क्लास चलची ता सते टिके पकड़ी और चा हे गला ना कोन मजा आस जीवनी मजा आसीबो कि नहीं ना मजा आसीबोनी माने बहुत वर्षा जेतबेले हुए वर्षा काहाको भल लागे वर्षा माने वर्षा फिजिकल वर्षा नो वर्षा माने मानसून बारिश जो रेनफॉल रेनफॉल का भल लागे पूरा बबल ना यस आज मु पकड़ीटे करबी आ चलो तो इधर तो आपण मानकर रॉ मटेरियल अछि माने एटा होछि आपण मानकर इंटरमीडिएट हे गला ही रेफर टू द गुड दैट आर ओनली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस नो खाली सेमति किछु अछि ना मु कहली ओनली एटी यूज कराई छि जेतबेले एमती वाला तुमको आसीबो ना सेतबेले भाबिबो कहीं ओनली को में कराई छि एक्सट्रीम वाला ना कि समस्त एक्सट्रीम वाला सेंटेंस सब गुडा ही भूल हे जिवो बट ज्यादा चांसेस को ताको डबल चेक करे पे पड़बो ज्यादातर चांसेस की भूल होबार थाए इट इज ए गुड that cannot be resold after consumption कौन भाई करी हबनी भाई resold तापर अछि it is a good that contributes to the gross domestic product by being consumed or invested without further transformation yes तो d होछि कना without further transformation अछि माने without further transformation माने माने final good already हे गला तो final good हे गला तो जणे बे कहबो कि मैडम मु तो गोटे लेहेंगा किनथिली आ गोटे अनारकली किनथिली से जिनसटा को तबे मु काटी कोटे के ट्रांसफर करके आ गोटे बने दउछि बुझिपाइला बट सेमती नुह तो जो भी प्रोडक्शन सेक्टर पे से लेहेंगा हो बा से ड्रेस हो सेटा हो ताकर फाइनल गुड बुझिपाइला तो तमे एटा को रखी छ तमे एटा को काटी दबो कि एटा आ गुटे स्टेनलेस ने आसी तमे चॉपस्टिक करी बनेबो तकर फाइनल गुड तो चेंज हे गला सेमती हुए ने हला तो कंपनी पे एटा होछि स्टाइलिश टा फाइनल गुड ओके चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यस irrelevant very good consider the following goods a car sold to a consumer a raw materials used by a manufacturer a computer purchased by a company for office use flour purchased by a bakery which how many of the above goods are classified as final goods very easy कौन हम तो जते बेला आपण कंज्यूमर अछि एटा कंज्यूमर हैला कंज्यूमर अछि यदि कस्टमर थांता ताले जो माने क्लास रछंती क्लास रे तो आज पिला पिला माने कोन में आंसर दो न बुझी परनो बहुत इजी टॉपिक अछि छाड़ तो कहा को फोर्स करिया नहीं हैला समस्तंकर फ्रीडम अछि फ्रीडम ऑफ से साइलेंट भी अछि हाउ छाड़ चलो तो को भी हमर जोडे कि हमें गुड्स हमें देखिबा जोडे कि कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स the car sold to the consumer not to the customer जदि कस्टमर हितंता तो अलग प्रकार हितंता तो कंज्यूमर माने से जदि नहीं छि फाइनल प्रोडक्ट नहीं से कोन करबो ऑब्वियसली यूज ही करबो जे कंज्यूमर और कस्टमर भीतर में कोन डिफरेंस जानछो कस्टमर भी जे से परचेज करे बट मे बी फॉर हिज और हर यूज और टू गिव समवन कंज्यूमर माने जे निजे से जिंसडा को निजे यूज कला सपोर्ट में चॉकलेट आनी कि मजन को दे देली तो जहाँ को दे देली सी हेला कोन कंज्यूमर सी हेला खाइला बट मु हेली कोन कस्टमर तो बेसिक क्वालिटी कोन अछि बेटर अछि टेस्ट तो के बेसी कहि परिबो ना कंज्यूमर भल भाबरे कहि परिबो ना कि कस्टमर ओके तो जते बेला आपण मान को एटा एक्स्ट्रा नॉलेज हे गला तो कार सोल्ड टू द कंज्यूमर यस raw materials अछि माने इट इज नॉट कमिंग अंडर द फाइनल गुड it is coming under the intermediary goods computer purchased by a company for office use एटा भी आपण मानकर फाइनल गुड ही हबो जदि आपण पे वेदांत क्लासेस अछि कंप्यूटर बहुत ज्यादा किनुची तो साडा ऑफिस यूज पे बोलची फिर भी एटा फाइनल गुड ही हबो तापर अछि फ्लोर परचेज बाय द बेकरी नो काइना ये जो व्हीट फ्लोर अछि से व्हीट फ्लोर आनी कि से कोन करबो ना तादुर आउरी बने कि ब्रेड बनेबो कि आउ कोन कोन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेबो त सेटा हो तरला इंटरमीडिएरी गुड हे गला तो आंसर कोन हबो ओनली 2 बी विल बी द करेक्ट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर
6 number question कौन अछि arrange the following types of national income estimates in the correct chronological order for their release तो कोडा कोडा फास्ट हुए तो एडवांस एस्टिमेट फास्ट हुए एटा बेसिकली आपण मानको मन रखिया पे पड़िबो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल अछि कोडा आगे आसीबो एडवांस फास्ट रिवाइज एस्टिमेट्स प्रोफेशनल एस्टिमेट्स फाइनल एस्टिमेट्स कोडा आंसर अब यार 6A 1 3 2 4 yes तो बेसिकली आपण मानकर आंसर 6A ही हबो A will be the correct answer तो बेसिकली आपण मानकर डाटा केते केते ऐड हो जदि एडवांस एस्टिमेट ही तो फाइनेंशियल फास्ट बाहरी गला तापर प्रोविजनल एस्टिमेट आउट के कोन बाहरी डाटा ऐड करा जिवो तापर आपण मानकर आसीबो फास्ट रिवाइज एस्टिमेट आहुरी डाटा ऐड करा जो फाइनल एस्टिमेट रे बस तो ए जिंस आपण मानको कोन करे पड़िबो रिमेंबर करे पड़िबो ताई नै भीतर बेसी घुसीबार नहीं नॉट नेसेसरी सीए वाला तो एग्जाम तुम माने दोनो तापर देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीडीपी डिफ्लेटर GDP deflator. The first one is the GDP deflator is generally considered as a more comprehensive measures of inflation than the consumer price index. Statement 2. The basket of GDP, the basket of goods considered in the GDP deflator is fixed, similar to the CPI, to ensure year-on-year comparability. Statement number 3. A country that is net importer of crude oil will likely see a faster rise in its CPI than its GDP deflator during a global oil price shock. कौन आंसर अब? देखो जते बेले आपण मानकर स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग यस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग दैट इज करेक्ट काहे ना जो भी आपनकर जीडीपी डिफ्लेक्टर थाए दैट इज नॉट फिक्स्ड it changes automatically based on what is currently being produced in the country जदि आपण जीडीपी डिफ्लेक्टर माने कोन जानछन आपण को नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी ताको नै बाहर करा होची ना तो जदि आपण मानकर करेंटली कोन प्रोड्यूस होची फिक्स न थाए फिक्स तो कोन थाए फिक्स आपण मानकर थाए कोन सीपीआई consumer price index in the statement number 3 country that is net importer of crude oil is likely to see faster rise in the CPI than the GDP deflator कोन पे हबई जिंस आपण इन्फ्लेशन जानिचंदी इन्फ्लेशन जतरा आरबीआई डाटा बाहर करे तो सीपीआई रु ही डाटा नै के बाहर करे तो इन्फ्लेशन लगोटा अछि हेडलाइन इन्फ्लेशन आ गोटा आपण मानकर अछि कोर इन्फ्लेशन जतरा आमे ऑल द प्रोडक्ट आमे नौचंदी जहा भी से बेस्केट रे अछि फॉर द सीपीआई कैलकुलेशन दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन जदि सेतरा में माइनस कर देबा फूड एंड फ्यूल हला फूड एंड फ्यूल जदि में माइनस कर देबा ताले हमर कोर इन्फ्लेशन काहे कि ताको में माइनस करंदी काहे दिस इज वेरी वेरी वोलेटाइल बुझि पाइले कि नहीं yes that is also correct so statement कोन अपन आंसर अब कोन statement 1 is correct statement 3 is correct 2 hela wrong so 1 and 3 will be the correct answer c consider the following statements nominal gdp can rise even if the total production of goods and services fall real gdp accounts for inflation while nominal gdp doesn't nominal gdp will always be higher than real gdp in an economy experiencing deflation कौन आंसर हम आंसर कौन हम तो nominal GDP can rise even the total production of goods and services fall एटा ठीक अछि ना भूल अछि yes ठीक अछि तापर real GDP accounts for inflation while nominal ना एटा तो भूल अछि nominal GDP will always be higher always ना सेंति कहि हबन always be higher ना सेंति तो किछि कहि हबन तो आंसर कोन हबो तो आंसर हबो only one will be the answer एटा रॉन्ग अछि एटा रॉन्ग अछि देखो पिला माने सपोज कि गोटे शू दुकान अछि शू कीपर अछि सब हला शॉप्स अछि धर शू शॉप्स तो सेठी से देखिले कि 20
2020 देखिले कि तार कौन होतला ना 100 क्वांटिटी और प्राइस सपोज आपण माने नियंतु 50 रुपीस हैला तो 500 रुपीस जता सेल होतला क्वांटिटी हला 100 एटाला प्राइस हला आपण मानकर ईच प्राइस हला आपनकर 50 रुपीस अरे 5 ओके तो 5000 तार सेल होतला ड्यू टू इन्फ्लेशन कौन हबो इन्फ्लेशन बैंक जतला आपण तेटा तला कौन हबो जीडीपी हला एटा तो टोटल गुड्स एंड सपोज इमेजिन करो कि आपनकर 100 टा ही सु होउची आ गुटे के पैसा हला तापर 50 रुपीस तो मार्केट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू जीडीपी तो जीडीपी सपोज अछि 5000 ना देखिए कि आपण 2023 रे आपण देखिले तो 2023 रे कोन होची ना क्वांटिटी हो जाची 50 बट प्राइस हो जाची केते ना 100 ईच प्राइस हो जाची 100 कहने जला इन्फ्लेशन हुए तो इन्फ्लेशन और प्राइस बढ़ी गला ता माने कोन लोकंगर परचेजिंग पावर कमी गला तो जति की क्वांटिटी रे सेल होतला सेति क्वांटिटी रे सेल नय के और कमी जाची तो एठी भी आपण मानकर सपोज एठी हम 200 नै जवा बेटर अंडरस्टैंडिंग पाई तो एठी आपण देखिले कि आपण मानकर तो आपण देखले कि 10000 टंका आपनकर सेल हेछि तो जदि आपण देखिबे तो जीडीपी रे तो आपण मानकर ग्रोथ हेछि बट एक्चुअली कोन होछि ना प्रोडक्शन आपण मानकर कमी जिवो जेहेतु आपण मानकर इन्फ्लेशन लोकंगर डिमांड कमी गेला लोक किनि ही परनांती ताले कोन हो ना प्रोडक्शन कमी जिवो बुझि पाइलो सेतमे स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट चलो why is it important to periodically update the base year used in gdp calculation कौन पे दिस इज इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा करंट अफेयर अच्छी थिला वैल्यू डेप्रिशिएट हेतला so now you tell me why it is important to periodically update the base year used in gdp calculations कौन पे जिनसटा इम्पोर्टेंट किए कहबो कौन आंसर हबो to reflect changes in the inflation rates more accurately, to ensure GDP measures are based on current consumption patterns and technological advancement, to avoid changes in international trade impacting domestic GDP estimates, to reduce the impact of global exchange rate on real GDP. So, your answer basically कौन हबो ना your answer वाला पिला माने B ही हबो to ensure measures are based on current consumption patterns and technological advancement सेति बेस ईयर को आपन को पीरियडिकली चेंज होबा दरकार हम इंडिया तो बेस ईयर कोन पई चेंज होनतला कि आपनकर चेंज हेला के 11 12 पर्यंत थिला आपन मानकर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी कीप्स चेंजिंग यस तो जतरा आपन को चेंज होबार थिला सेतबेला आपन को डिमोनेटाइजेशन आसिला तापर आपन मानकर 17 ले आपन मानकर होची जीएसटी आसी गला तापर आपन मानकर कोविड आसी गला एमती चली तो बंद ही होनी इजराइल वाला जो माने इजराइल और रशिया रो यूक्रेन और रशिया रो वार आसी गला तो सेति में एबे ही चेंज प्रपोज कराई छी तो एबे चेंज हबो हैला चलो तापर आसिला व्हेन चूजिंग ए बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया several factors consider which of the following are general criteria for selecting a base year हमें केमिति सिलेक्ट करछन फर्स्ट अछि the base year should reflect a normal economic scenario without major distortions like natural disaster or economic crisis. The base year should represent a period of significant economic reform. The base year should have reliable and comprehensive data on economic activity. The base year should always be a year of low inflation to avoid overstating economic data. Hela? तबे को कि कोड आंसर हबो select the correct answer using the code. Code answer हबो तो फास्ट कौन अच्छी फास्ट आपनकर अच्छी बेस ईयर शुड बी रिफ्लेक्ट नॉर्मल इकोनॉमिक सिनेरियो यस ए जिंस तो हबा दरकार जदमिति मैं आपन कहली बेस ईयर चेंज ही पानोथिला कोन पय ना आपन मानकर हार्ड क्वेश्चन हे जाई छि बोधे हार्ड क्वेश्चन देखो पिला माने एथर जो माने मेंस देछ से माने देखो कि क्वेश्चन से केमति पचल छि बुझि परछो तो जो माने टाइप रो काइना जो सब स्टेट पीसीएस नॉट ओनली ओडिसा every state PCS they always want कि best candidates should come into the administration बुझिलो तो आगे वाला सिस्टम नहीं because of that only to align the syllabus with the UPSC तो दो आपन दुईटा ऑप्शनल थिला तो काडी के आपन गोटे ऑप्शनल हे गला
आपन एथिक्स रखा हला सो दैट कि बेस्ट कैंडिडेट शुड जॉइन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. Okay, so that is why it is very very important कि you should practice easy, moderate and hard questions. So this question is not hard at all. तुमको सेमती लागुची कमे ना एमती रखा है बोली. So when choosing a base year of GDP तो निहाती भाबरे rural natural disaster और economic crisis न हबा दरकार. You should represent a period of significant ना सेमती किछ नै. Reform होता दरकार ताल तमरो 17 निहाई तांता reform हैला हैला तो सेटा पे निया हैनी ना तो सेमती किछि भी नाही. The base year should have reliable of comprehensive data. Yes, एटा हवा दरकार 3 will be the correct answer. Base year should always be year. देखो जेते बेले अपन लो इन्फ्लेशन ना that is desirable. Low inflation हवा दरकार. But that doesn't mean कि this is the criteria for selecting the base year. This is not the criteria for selecting the base year. But this is desirable कि low inflation हवा दरकार. So that कि low inflation ले भला country यदि inflation total हबन तो country रे किसी growth नाही. बहुत ज्यादा बढ़ी गला तो ताले आहुरी जो इनइक्वालिटी अछि आहुरी बढ़ी जिवो पॉवर्टी बढ़ी जिवो बुझि परछ कि नाही. तो आमे जतबे ग्रोथ और डेवलपमेंट कथा कहउछंती ग्रोथ मीन्स कि आपण मानकर इकोनॉमिकली ग्रोथ केते होछ आपण जीडीपी पर्सपेक्टिव रे केते ग्रोथ होछ. डेवलपमेंट में आपण क्वालिटी ऑफ लाइफ केमते होछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग केमते होछ whether you are able to get the amount of education you deserve, whether you are able to avail all the health facilities. बुझ परछ कि नाही. तो आंसर कोन हबो यार 1 and 3. 1 and 3 will be the correct answer. चलो 11. Consider the following statement. A country's GDP can be lower than its gross value added during a specific financial year. Yes or no? Second achi, if this situation can occur if the total value of subsidies on product provided by the government exceed the total value of taxes collected on products. कौन हबे आंसर. तबे मते कहू कि ए और बी वाला स्टेटमेंट ठीक अछि कि भूल अछि ना भूल अछि आ जदि ठीक अछि ताले प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होछि कि नाही आ जदि ठीक भी अछि एक्सप्लेनेशन ठीक अछि कि नाही की आंसर दबो जल्दी केवल विवेक ही आंसर दोछ किछि मैटर नै विवेक जते तमे आंसर दबो तम निजर रिवीजन हबो आंसर दोनांती अब ठीक ताले माने क्लास अटेंड करछो सेटा ओडे बडा छ वर्षा बागर समते टिके रिलैक्स हो जाइछो. हेला पिले माने कोन आंसर हबो देखो. So the country's GDP can be lower and its gross value added during माने से कहूची कि GVA can be lower than GDP. No sorry उल्टा कर दे. GDP can be lower than GVA है परिबो कि नहीं. Yes or no? Both correct. Yes, both correct. देखो जते बेला आपनकर GVA आसुची ना तो केते आपनकर इनपुट हैला केते आपनकर आउटपुट हैला. आपनकर GVA हे गेला जदि GVA जदि जो सिचुएशन हबो जते बेले आपण मानकर yes subsidy the total value of subsidies on product provided by the government. Yes, जदि आपनकर सब्सिडी टा कोन अधिक है जिवो आ आपण मानकर टैक्स जदि कम है जिवो सेही कंडीशन ले केवल जीडीपी इज लेस देन हबो केते जीवीए. तो आपण मानकर स्टेटमेंट 2 भी ठीक अछि आ जो एक्सप्लेनेशन दे दैट इज आल्सो करेक्ट. So both the statements 1 and 2 is correct. The correct explanation of statement 1. Yes, A will be the correct answer. चलो तापर आसला 12. Consider the following activities. Salaries paid to the government employees, construction of new residential, illegal or drug and individual purchasing share of a company. How many of the given activities are included in the calculation of country's GDP? Very easy. चलो जल्दी जल्दी को कोडा कोडा आपण मानकर yes ठीक अछि. तो कोड एर आंसर हबो देखो salaries paid to the government employees. Yes, government को जो salary अछि दी government payment को कोत आसीबो आपन को प्रोडक्शन केम कैलकुलेशन कोन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैला आ आपन को नेट एक्सपोर्ट एया ना यही तो आपण मानकर माने जो जीडीपी रो आपण मानकर फार्मूला कि कैलकुलेट करिवार कंजम्पशन मेथड. तो सैलरी जदी होची
ताले कंजप्शन होची ना नहीं तो एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट जी वाला कंपोनेंट होची तो एटा होची राइट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल जदि न्यू रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होची माने एटा कोठी आसुची इन्वेस्टमेंट को कंपोनेंट एटा इन्वेस्टमेंट एटा होची आपनकर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इलीगल ड्रग्स कौन इलीगल ड्रग्स तो रेकॉर्ड ही नहीं छाड़ा तो हबनी an individual purchasing share of a company this is also not coming under GDP why because it is not including any goods and services produced so this is also incorrect so only 2 will be the correct answer आगु जिबा with reference to the concept of externalities consider the following statement externalities माने कोन आपन कहि सलिनी ततबे आपन किछुटा करूचंती तार कोन माने बाय प्रोडक्ट हो that is externalities positive na negative He referred to the unintended side effect of economic activities that affect third parties. A positive externality benefits third parties while a negative externality imposes a cost on them. Externalities are always internalized in a perfectly competitive market. तबे कुह कि कोटा अपन मानकर करेक्ट हबो पिले माने कोटा करेक्ट हबो देख पिला माने तो फर्स्ट क्वेश्चन देखि अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट जदि अछि तो एटा अछि अपन मानकर राइट अछि अपन ओटे कोनोस ओटे काम करचंती सपोज आपन को बहुत माने भलो लागे कोन कि आपन को बहुत भलो लागे कि कार बहुत शौक अछि अपन कार किने पे जाउछंती किने चलचंती अनइंटेंडेड अपन मानकर अछि कि अपन पोल्यूशन करे पे चाहउन बट अपन किनु कंजप्शन करे चलचंती तो तर भीतर पोल्यूशन होउछ तो अनइंटेंडेड इफेक्ट रहले कि नै ठीक अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट हला करेक्ट सेकंड द पॉजिटिव एक्सटर्नल बेनिफिट ऑब्वियसली जदि आपण गछपत्र लागिया को शौकीन अछंती आपण गछपत्र लगाउछंती ता माने कोन तो ऑब्वियसली हबो मार्केट वाला यस थर्ड ऑप्शन हे गेला आपण मार्केट फेल्योर हबो वेरी गुड मार्केट फेल्योर हबो दैट इज व्हाई कोन होची ना गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन थाय तो एक्शन इज ऑलवेज इंटरनलाइज नो एटा होची आपण मानकर रॉन्ग आंसर तो 1 and 2 will be the correct answer a will be the correct answer 1 and 2 चलो it is argued that GDP doesn't cover up externalities in the production of goods and services if there are positive externalities then the socially desirable GDP will be lower than the commercially desirable GDP the socially desirable GDP will be higher than the commercially desirable GDP now the socially desirable GDP cannot be produced within the intervention of the state the commercially desirable GDP will not be able to utilize all कोड आपण मानकर करेक्ट आंसर हबो तबे मते को एटा कोन हबो आंसर बी यदि हमें कहबे कि एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव इफ द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देन कोन हबो ताले कोन हबो ना सोशली जो जिंस हम डिजायर करचंती सोशली माने कोन पोल्यूशन कम होतो दरकार एनवायरनमेंट रे भला दरकार सेही सब जिंस आपण मानकर रेगुलेट हे पारे बुझि पाइलो तो बी विल बी द करेक्ट आंसर तो सोशली डिजायरेबल जीडीपी विल बी हायर देन द कमर्शियली डिजायरेबल जीडीपी अगो जिबा
Consider the following examples: unemployment benefits, pension, wages paid to the government employees, scholarship granted by the government. How many of the given above examples are considered transfer payment? Transfer payment. Transfer payment है कौन? Market outcomes is lower than optimal. कहाँ आंसर एटा? देखो ट्रांसफर पेमेंट माने कौन? ट्रांसफर पेमेंट माने यूनिडायरेक्शनल पेमेंट, जो कि आपण मानकू सपोज कि आपण आपणकर आपणक ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଧର ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ସପୋଜ କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ଲେବର ବିକୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି। पण ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଆପଣଠୁ ଆପଣ ବାବା ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଆସିଲେ, ବଟ୍ ଆପଣ ତାର ମାନେ ତାର ରିପେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଖାଲି ନେଇ ଆସିଲା ଦେଲୁ ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ट्रांसफर पेमेंट ହେଉଛି यूनिडायरेक्शनल, ମାନେ ଗଲା ତା ରିଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି। ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟमेंट बेनिफिट यस, पेंशन पेंशन हम कि नहीं, wages paid to the government employment no, scholarship granted to the government, scholarship granted by the government, ଯେତେବେଳେ स्कॉलरशिप दिया होची सेटा भी आपण मानकर ट्रांसफर पेमेंट ही जो सॉरी ट्रांसफर पेमेंट ही जीवो, बुझि पाइलो? तापर पेंशन को पेंशन टा ट्रांसफर पेमेंट हबो कि कोन हबो? पेंशन हाँ मु जाने पे चाहूची, काहे ना सेमाने को पाखर उठे ऑप्शन अछि कि भाई मु तो आगुरु ऑलरेडी मोर काम करिछि ना, तो कोन हबो आंसर? बहुत ज्यादा पावर कट हे गला रे भाई, कोन आंसर हबो? ओनली टू, ओनली टू विल बी द आंसर। पेंशन टा भी आपण मानकर पेंशन टा भी आपण मानकर जीव कोथरे ना ना ओनली 3 हबो। एटा आपण मानकर अनएम्प्लॉयमेंट हला आपण ट्रांसफर, एटा भी आपण मानकर ट्रांसफर पेमेंट, एथि पई आवाला वेजेस पेट एटा आपण ट्रांसफर हमनी, एटा भी आपण मानकर ट्रांसफर। तो आंसर हबो ओनली 3, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बी के देखले आंसर बी हमनी। अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स माने एबे धर सपोज कि गवर्नमेंट बाहर करबे कि भाई जो माने अनएम्प्लॉयड अछंती सेमानकु जेमती ओल्ड एज पेंशन दोची, भत्ता दोची, सेई टाइप रो सेमानकु दबो, बुझ पाइलो? बट पेंशन वाला जो पेमेंट अछि केतरा सेक्टर रे पेंशन को निया जाउची, तो केतरा सेक्टर रे पेंशन को निया जाउनी, तो तीनटा लिखले भी ठीक हबो, दुटा लिखले भी ठीक हबो। जदि आपण मानकर पब्लिक जगह अछि तो पेंशन को निया जाउनी, बाकी जगह तो आपण को पेंशन को निया जाउची। एबे तो पेंशन नाही उठे दिसला, तो এই জিনিসটা টিকে লক্ষ্য করিব कि जदि आपको आंसर रे टिके चेंजेस आसी पारे। आपन को कोन पे मिलिबो? एबे जो सुभद्रा योजना पे जो पैसा दिया होछ सेटा होछ आपन मानक ट्रांसफर, सब्सिडी दिया होछ कि न दिया होछ, सपोज कि एबे जो माने अछंती, जो माने स्कूल ले कॉलेज रे पढुछन ग्रेजुएशन, तो 10,000 टका मिलथला ना, तो सेटा होछ ट्रांसफर पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता हेइन, जदि आपन मानकर अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता हैला इंडिया रे, तला जो माने अनएम्प्लॉयड अछन से मानको मिलियो। अनएम्प्लॉयड भीतर आपन आसुछंती थोड़ी, आपन जो जॉब करूछंती ना, जेतेबेले थिले सेतेबेले आपन एक्टिवली जॉब खोजुथिले कि? बुझि पाइला? तो पेंशन लो आपन मानकर पेंशन ले आपण मानकर डिफरेंट डिफरेंट आपन वेरी करा जाय पारे, बट बेसिकली आपण मानको पेंशन को आपण टिके देखिबे, काना गोटे गोटे आंसर भी नोच इंक्लूड होउची, केतरा जगह होउनी, बेटर कि आपण को एलिमिनेटिंग कर दे कि पेंशन को नेबे ही नहीं, ओनली 2 मार देबे, आपण सेफ रे रहबे। फोर्थ थ्योरम आपण पचरथले ना, फोर्थ थ्योरम माने कि जदी
माने जो भी एक्सटर्नली सपोज नेगेटिव अछि ताको आपण मानक भीतर केमती सॉल्व कर देबे बुझि पाइले केमती आपण हेटा सॉल्व करिवे सपोज कि आपण गोटे जगह रे कोठी गोटे जगह जेमती आपण कार्बन डेटिंग से जो जिंस आसुची माने आपण करूचंदी बट आपण से जो कार्बन टाको आपण क्रेडिट टाको आपण किनुचंदी हेटा जे आपण एनवायरनमेंट आ इकोनॉमिक रे आसे आपण सिलेबस रे पार्ट नो जदि आपण मानकर राइट भला भाबरे डिफाइन करा हबो जदि आपण मानकर रेस्पोंसिबिलिटी भला भाबरे डिफाइन करा जिवो से जगह आपण मानकर कोर्स थ्योरम से देथिले एनवायरनमेंटल आ इकोनॉमी ऊपर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस जस्ट मैं आपको कहि देली बुझि पाइले जदि आपण पोल्यूशन जदि करूचंदी मुधर सपोज कि आपण गोटे फैक्ट्री करचंती एति कि आपण पोल्यूशन कले कि आपण केति गछ काटे पे पड़िला सेते आपण आउ को जगह तको सब्सटेंशिएट करबे कंपेंसेट करबे तले आपण हेटा कोर्स थ्योरम के जिवो एनवायरनमेंट आ इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली दा जो एक्सटर्नलिटीज अछि नेगेटिव अछि ताको आपण कन्वर्ट कर देबे दैट इज कोर्स थ्योरम ओके चलो तापर आपण माने जदि चाहउचंदी मो सहित रहिया पय जुडी रहिया पय ताहाले आपण एई नंबर रे 8280532825 ए नंबर रे ADG10 लेखि पठेबे मु आपन को हेल्प करबी हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू मेक टाइम टेबल नोट केमती मनेबे रिवाइज केमती करबे प्रैक्टिस केमती मल्टीपल टाइम्स करबे डिसिप्लिन केमती मेंटेन करबे विदाउट डिसिप्लिन यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस आउ आपण एग्जाम केमती क्रैक करबे आ बहुत सारा आपण सब्जेक्ट अछि डरे जबा नाही ताको आपण केमती मैनेज करबे कि केमती आपण माने पढिबे या बाद जदि आपनकर आ कोनोसी भी क्वेरी अछि रिगार्डिंग आवर कि आपनकर कोर्स को नै कि हेगला कि बाकी आपन मानकर केमती प्रिपरेशन करा हबो बुझि पाइलो तो सेबे आपण 8280532825 ए नंबर आपन कॉल करि परिबे टेक्स्ट करि परिबे जहां भी आपनकर क्वेरी अछि समस्तनकर क्वेरी को आपण एड्रेस कर जिवो बाकी आ को भी टॉपिक आपन चाहउचंदी दया करी कमेंट रे लेखंतु हम निहाते बरे से टॉपिक आनिबु आपन को एठी स्कैन कला परे आजिरो क्लास रा आपन मानको पीडीएफ आपन मानको मिलि जिवो आपन डाउनलोड सेटे कर परिबे ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू विवेक थैंक यू एवरीवन जो माने भी आपण माने जॉइन करचंती समस्त को विवेक आपण लागि रहचन से गोटे भलो जिंस नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बाकी सब सब्जेक्ट को भी इक्वली टाइम देबार अछि आ हार्ड किछि नहीं जदि आपन कांसेप्ट क्लियर अछि तले आपण सब भी क्वेश्चन भला भाबरे आंसर दे परिबे ओके थैंक यू एवरीवन ऑल द बेस्ट ओकरे भी गोटे खाइ दियो रे वर्षा हे गला हला